Yes, hello everyone. Am I audible? Yes, guys, am I audible or not? Just write yes or no in the chat box. Okay. Okay, so hello everyone. My name is Pranshu Rathor and I work as a technical trainer for Selected.com. And today we are going to learn about building RESTful APIs with Node.js and Express. Okay. So let us don't waste our time and we'll start. Is my screen visible to everyone? Just write yes or no in the chat box. Okay. Okay. So what we have to do? We have to build first a server. Okay. So first we will learn how to create a server. Then secondly, we will see how we can create RESTful APIs. Right. So I also wanted to know in which language I should take this webinar. It will be a Hindi or English. So can you guys tell me your preferences? English and Hindi. English, Hindi, both. English, yes. Hindi, English, okay, both. Okay. As I see, I will use both the languages. Okay, English as well as Hindi. Right. So let us just start करते हैं हम and so सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? First of all, I will क्रिएट वन न्यू फोल्डर। सो सबसे पहले हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो कि जब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, सबसे पहले एक नया फोल्डर बनाओ और इस प्रोजेक्ट को कुछ नाम दो। ओके। सो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को नाम देने वाला हूँ रेस्टफुल एपीआई। ओके। सो आई विल नेम द फोल्डर एज रेस्टफुल एपीआई। देन आई विल ओपन दिस फोल्डर इन आवर कोड एडिटर। ठीक है, तो जब आपने फ़ोल्डर बना लिया है, इसको आपको वीएस कोड में ओपन करना है या आप जो भी कोड एडिटर यूज़ करते हैं, आप वहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं, राइट? नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ़ोल्डर है, इट इज़ ओपन। ओके, माय फ़ोल्डर इज़ ओपन्ड इन माय कोड एडिटर, राइट? नाउ व्हाट आई नीड टू डू? आई विल यूज़ नोड एंड एक्सप्रेस इन माय प्रोजेक्ट। सो नोड और एक्सप्रेस का यूज़ करने वाले हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। So उसके लिए हमें क्या करना होगा? We have to initialize npm. So go to the terminal tab and click on new terminal. Okay, so there will be a new terminal and here we have to initialize npm. Okay, so I will write npm init. ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा npm init। init का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब आपको npm को सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपके इस खाली फोल्डर के अंदर। अब हम npm को क्यों इनिशियलाइज करने हैं? क्योंकि हम यहाँ पर npm का यूज करने वाले हैं। ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता है npm क्या होता है, व्हाट इज npm? सो इट इज अ थर्ड पार्टी पैकेज लाइब्रेरी फॉर Node.js। ओके, यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी पैकेजेस मिल जाते हैं, लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, जो आप Node.js के प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने पाइथन पर काम किया है, सो पाइथन में हमारे पास क्या होता है? पीआईपी, पिप होता है, राइट? वैसे ही यहाँ पर हमारे पास नोड जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? वी हैव द npm। सो यहाँ पर हम कौन से पैकेज का यूज करने वाले हैं? आई एम गोइंग टू यूज सर्टेन पैकेजेस। सो सबसे पहला जो पैकेज हम यूज करेंगे दैट विल बी एक्सप्रेस। सो वी आर गोइंग टू यूज एक्सप्रेस पैकेज फ्रॉम दिस npm registry। ओके, so what is Express? Let us have some walk around through Express. So it is a fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Means
you can create web servers with the help of Express, right? So let us see how what I can do. So first of all, as I said, we have to initialize npm. npm को initialize करोगे आप. So I will write npm init and -y. अब यहाँ पर मैं -y फ्लैग का क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज इस फ्लैग से क्या होगा कि ये मुझसे जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उसका डिफॉल्ट वो बाय डिफॉल्ट यस में आंसर कर देगा अपने आप. इफ आई हिट एंटर, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर इसने एक पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट किया है और उस पैकेज डॉट जेसन फाइल में ये सारी चीजें. अब ये पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या होती है? Package.json file is a file which manages your third-party packages which you are going to install from the npm. Okay. So npm से आप जो भी packages install करने वाले हो, ये फाइल उन सारे packages को, okay, this is another code. Let us close it. So आप जितने भी packages install करने वाले हो npm में से, वो सारे packages को हम manage करेंगे package.json वाली फाइल. Okay. So now let us see how we can install packages. So here is the install command. So you can see the install command is given here and it is npm I express. So I is short for install. So I will also write npm I express and press enter. So यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास एक node modules वाला फोल्डर आ गया है. Okay. So inside this node modules folder, our packages are installed. Okay. So अब आप मुझसे पूछोगे कि सर हमने तो सिर्फ एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, ये इतनी सारी चीजें क्यों आ गई? ओके, सो हमने तो सिर्फ एक्सप्रेस मांगा था, राइट? सो देयर आर आल्सो सम सपोर्टिंग पैकेजेस जो एक्सप्रेस यूज करता है. ओके, सो दैट इज व्हाई यहाँ पर इतने सारे पैकेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं. ओके, now let us start writing some code. So here in this folder, I will create one new file and I will name this file as server.js. Okay. Then here what I can do? सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा. First we need to make one variable and I'm going to make that variable with the help of const. So const से आप एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम होगा express. Okay, so const express is equals to, अब नोड के अंदर पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए, ओके, फॉर इंपोर्टिंग द पैकेजेस इन नोड यू कैन यूज द require function. So require is a function by which you can import the packages that you have installed. So let us write require and our package name, so it is express, right? Now we have imported express into this variable, so we can initialize this variable in some another variable. So मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा ऐप नाम का, जिसमें मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर दूंगा. ओके, सो आई हैव इनिशियलाइज्ड एक्सप्रेस इनटू माय ऐप वेरिएबल. अब हमें क्या करना है, वी कैन लिसन टू सम सर्वर, listen on some port number, sorry. So I will write app.listen and I can give a port number. So I want to listen on 5000 port. And I can give one callback function and inside this callback function, हम यहाँ पर लिखेंगे console log. So console log जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं हम. सो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अगर मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाए तो मुझे पता चल जाए कि हाँ, सर्वर इज स्टार्टेड एट पोर्ट 5000. सो इसलिए मैं कंसोल लॉग दे रहा हूँ, राइट? नाउ लेट अस रन आवर प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा नोड कमांड. So I will write node and I will write the file name. So node server. And you can see my server is started at port 5000. Okay, so I'm seeing this console log.
the same console log on my terminal. So let us check if our server is started at port 5000 or not. So for checking our server, I'm going to use Thunder Client extension. So what is Thunder Client? Thunder Client is an extension which helps you to check your APIs, to test your APIs. So Thunder Client के थ्रू हम क्या करने वाले हैं? हम अपनी APIs को टेस्ट करने वाले हैं. So it will be a get method. Then here I will change the URL. So it will be http:// and it will be localhost colon and our port number, that is 5000 and slash. So let us send the request. So you can see it is giving me 404 not found. Okay. And we are getting the error that cannot get slash. Okay. So that means कि अभी हमने सिर्फ एक सर्वर बनाया है, अभी हमने कोई भी APIs नहीं बनाई है, इसलिए वो मुझे बता रहा है कि आप जो API डिमांड कर रहे हो स्लैश दैट मीन्स द होम पेज इट इज नॉट क्रिएटेड येट, राइट? So we have to create that API. So to create a API in Node with Express, you have to write app, and if I write dot, then you can see different methods for creating APIs. So we want to make a get API, right? So let us write app dot get, and this is a function. Okay, then we have to give the name of the route. So my route is going to be the slash. Okay, that means the home page. Then we have to give one callback function. Okay, it is also called the request handler function. Okay, it will handle all our incoming request to the servers. सर्वर पर जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है, सो ये रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन उसको हैंडल करेगा. सो इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? एक रिक्वेस्ट होती है और एक रिस्पॉन्स निकल कर जाता है क्लाइंट पर वापस. फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मेक we can send something in the response. So I can write rest dot send. Okay, so response में आपको जो भी भेजना है आप यहाँ पर भेज सकते हो. And here we can write hello world. Okay, so the typical beginner program, hello world program, वही बनाया है अभी हमने. So अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने अपने सर्वर का कोड जो है वो चेंज किया है. ओके, आई हैव चेंज्ड माय सर्वर्स कोड, सो आई हैव टू रीस्टार्ट माय सर्वर. ओके, so let us close this. So control C and run command again, node server, and server is started at port 5000. Now let us check. So let us check if now we are getting any response. So let us send the request, and you can see I'm getting 200. Okay, and yes, you can see I'm also getting hello world. So hello world भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, right? So मेरे सर्वर पर अब एक रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट से. सो अभी मेरे क्लाइंट की तरह कौन काम कर रहा है? थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन. ठीक है, क्लाइंट कोई भी हो सकता है. ठीक है, आप ब्राउजर से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो. सो इफ आई ओपन द ब्राउजर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ब्राउजर ओपन करूँ और यहाँ पर लिखूं लोकल होस्ट कोलन 5000 स्लैश, and if I hit enter, so you can see the same hello world here. Okay, सो आप ब्राउजर से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप थंडर क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप पोस्टमैन का भी यूज कर सकते हो. सो आप सभी लोगों ने पोस्टमैन टूल के बारे में सुना होगा. इट इज आल्सो अ टूल दैट इज यूज्ड टू टेस्ट योर एपीआईज, राइट? सो आई गेस एवरी okay I guess everyone is clear with the things that we have covered yet. अभी तक जितनी भी चीजें हमने कवर की सभी को क्लियर है? ओके, ओके, राइट.
Yes, Vijay Kumar, I'm using both the languages. I'm using Hindi as well as English also. Okay. So we have both type of audiences. So I'm using English as well as Hindi also. If npm is not working, then you have to set the path. Okay. यूजर क्या रिक्वेस्ट करेगा, कैसे रिक्वेस्ट करेगा? सो वही बताया मैंने संजना अभी आपको, यूजर कोई भी हो सकता है। ओके। सो हाउ यूजर विल रिक्वेस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट एजेंट्स। यहाँ पर हम एजेंट्स का ही यूज कर रहे हैं। सो ब्राउजर भी एक एजेंट है। ओके। देन थंडर क्लाइंट भी एक एजेंट है। देन पोस्टमैन भी क्या है, एक एजेंट है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यूजर क्या रिक्वेस्ट करेगा, यूजर रिक्वेस्ट करेगा डेटा, जो भी उसको डेटा चाहिए। ठीक है, जनरली हम वेबसाइट्स को रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसे आप अपने एजेंट में, मतलब आप अपने ब्राउजर पर अगर लिखते हो www.google.com, सो आप क्या हो, आप क्लाइंट हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो गूगल की वेबसाइट। तो सर्वर आपको क्या देगा रिटर्न में, एक वेबसाइट देगा, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का कोड देगा, जिससे आप एक वेबसाइट देख पाते हो अपने एजेंट के ऊपर, अपने ब्राउजर के ऊपर। ओके। सो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस। ओके। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। So, okay, okay, it is clear. So now let us move ahead and let us see how we can create RESTful APIs with the help of the Node and Express, right? So let us open our code once again. I will go to server.js and here let us make some data. Okay, first of all, let us make some data and I will make that data with the help of let keyword. So let is another keyword by which we can make variables in JavaScript. Okay, so JavaScript में let keyword से भी आप variables बना सकते हो, right? So I will make a variable named products. Okay, so let us say let products is equals to curly square brackets. Okay, so we denote array by square brackets. So products is an array. मैं product को एक array बनाने वाला हूँ and it will be the array of objects. Okay, so I will give curly braces. So let us create some objects. Okay, so I will give some ID. Okay, so 101 and after ID I will give the name of the product. Okay, so product का नाम हम देंगे. So let us give Apple iPhone and after giving the name we can give the price. Okay, so price can be 8,000. Sorry, 80,000. Okay, and let us copy paste this some say few times. ठीक है, so मैं इसको same object को copy paste कर लूंगा दो तीन बार. So I can make different data. So it will be now Apple MacBook. Okay, and its price will be 1,80,000. Okay, let us make another product. So let us give it a name of 103 and it will be Apple iPad and let us say its price is 1 lakh rupees. Okay, then we will make the last product. So it will be 104 and the name of the product will be Apple AirPods and its price is 28,000. Right. So यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक array बनाई है. Okay, it is an array of objects. Okay, which have some key value pairs. ठीक है, इसमें key value pairs दिए हुए. So इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भेज सकते हैं on the client. Okay. तो जैसे मैं response डॉट सेंड में क्या भेज रहा था, हेलो वर्ल्ड भेज रहा था, वैसे ही मैं क्या भेज सकता हूँ, ये प्रोडक्ट्स का डेटा भेज सकता हूँ, राइट? सो इफ आई give rest.send response.send products and now once again I have made some changes to my code. मैंने फिर से कोड में कुछ चेंजेस किए हैं.
So now I have to restart my server again. Okay, so it is a very hectic task for me. So for that, I will use nodemon. Okay, so what nodemon will do? Nodemon will restart my server again and again whenever I make some changes. So nodemon क्या करेगा? मेरे सर्वर को बार-बार रीस्टार्ट कर देगा जब भी वो देखेगा कि मैंने कुछ कोड चेंज किया है. So let us hit enter and you can see server is started at port 5000. Okay, so let us see. So let us send the request, send it, and beautiful. You can see I'm getting the products data in my client. In the response, I'm getting that products data जो मैंने बनाया था. Apple iPhone, Apple MacBook, Apple iPad, and Apple AirPods. Right. So now what we can do? Okay, now we can make start making the RESTful APIs. Okay. So now let us first understand that what are RESTful APIs. So for understanding RESTful APIs, let us go to Google and search for RESTful API. So a RESTful API or REST API is a type of application programming interface API that allows two computer systems to securely exchange information over the internet. So you can say API acts as a mediator between the client and the server. Okay, it helps in exchanging the data from client to server over the internet. Okay, and what it does RESTful APIs? Okay, so REST stands for representational state transfer. Okay, so that is the full form of REST. Okay, so representational state transfer. So if you search for REST, okay, so representational state transfer, and it tells us that your architectural style should be like that, that your APIs work in the form of CRUD. Okay. सो जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आया मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ. सो रेस्ट बस क्या है? रेस्ट सिर्फ एक स्टैंडर्ड है. ओके, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है जिससे हम क्या करते हैं, हम अपनी एपीआईज को क्रड फॉर्म में बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रड ऑपरेशन. दैट मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. सो अवर एपीआईज आर इन द फोर फॉर्म्स. ओके, create, read, update, delete. Right. So I have to make these four operations on my server. Okay. So that users can create some data on my server. Then users can read the data from my server. Then users can update the data on my server. And the fourth one is that the user can delete some data from my server. Okay. So अब हम क्या करने वाले हैं? हम REST APIs बनाने वाले हैं इन द सर्वर. ठीक है, हैकिंग मैं सिखा दूंगा क्या, लेकिन तुम्हें समझ में आएगी हैकिंग. ठीक है, सर्वर बनाना आता नहीं है, हैकिंग सीखोगे पहले. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है भाई. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें रेस्टफुल एपीआईज बनानी है. सो जैसा कि मैंने बताया कि रेस्टफुल एपीआईज जो है वो CRUD के फॉर्म में होती है. ओके, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट. Okay, so how can we get the certificate? You will get the certificate after giving one quiz. Okay, so the quiz will be conducted after the end of this session. Okay, so have some patience, learn some new skills, and then the certificate will be yours. Don't worry about the certificate; it will be provided to all of you. Okay, so don't take tension on that. So now, no, the quiz will be on our portal. It is not on the Google form. So let's get back to our code. And in our code, I will give some comments. So first, as I told you that we have to make the APIs in the form of CRUD. So first, I will make some API that will create some data. So create API. Then we have to make one read API.
Okay, then we have to make create, read, update API. Then we have to make one delete API, right? So let us delete this API. We don't need this API. So now I have some data, and based on this data, I have to create these four APIs so that I can create some data inside this products object, and I can read the data from this products object. Also, okay, let us collapse this products. Okay, and we can update the data in this products array, and we can also delete the data from these products array. So these four things we have to do on this data. So इस डेटा के ऊपर आपको चार काम करने हैं। क्रिएट करना है, आप इसके अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सको, ठीक है, आप सारे प्रोडक्ट्स को रीड कर सको, देन प्रोडक्ट्स को अपडेट कर सको एंड प्रोडक्ट्स को डिलीट कर सको। सो दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक द सिंपल वन। सबसे पहले आसान वाली एपीआई बनाते हैं, दैट इज द रीड एपीआई। सो रीड करने के लिए हम कौन सा एचटीटीपी का मेथड यूज करते हैं? वी यूज द गेट मेथड। So I will write app.get. I want to get the data from the server. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम route दे सकते हैं. We can give the path or the route. So the route will be slash and it will be products. Okay. So it will give me the data of all the products. And once again, we will make one request handler function that will be a callback function. और यहाँ पर हम दे सकते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पर हम भेज सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड इट विल बी द प्रोडक्ट्स। ओके, सो नाउ see the magic of nodemon. If I go to terminal, it is telling me, okay, restarting due to changes, starting node server.js, and my server restarted automatically. Okay, I don't have to do it manually every time. ठीक है, सो अब नई रिक्वेस्ट है। नाउ माय पाथ इज नॉट स्लैश, नाउ माय राउट इज स्लैश प्रोडक्ट्स। ओके, एंड इफ आई हिट सेंड, so you can see I am getting a 200. So this is called the status code. Okay, that we can set the status code of all the requests. This is the status message, it is okay. This is the size of the data that we are getting. Okay, and this is the time. Okay, so how much time it is taken to get the response from the server. So मेरे पास ये सारा डेटा आ रहा है, right? Now the next thing that we want to do is to make a create API. Okay, so how we can make a create API? So for that we will make use of the app dot post. Okay. So post API is used to send the data to the server. ठीक है, हम अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में डेटा भेजेंगे सर्वर पर, जो डेटा कहां पर सेव होगा, इस प्रोडक्ट्स एरे के अंदर सेव होगा। ओके, सो once again we have to give the path, so that will be slash product. Okay, and I can give the comma, and now there will be one request handler function. So same thing, request and responses. So you can see the pattern is same for creating APIs, only your logic will change. Okay, so pattern एक ही रहने वाला है सारी APIs का, बस उसके अंदर का लॉजिक चेंज हो जाएगा। Okay, so to create this post API, so first let us see that we are getting the data in request or not. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम डेटा को ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं रिक्वेस्ट के अंदर। सो मैं यहाँ पर करता हूँ रिक्वेस्ट, ओके, कंसोल लॉग रिक्वेस्ट, और देखते हैं हमें रिक्वेस्ट में क्या मिलता है। सो न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट वी हैव टू चेंज द route.
सो यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जगह सिर्फ प्रोडक्ट आएगा। सो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर लो एक बार, सिर्फ प्रोडक्ट, इट इज नॉट प्रोडक्ट्स। ओके, देन वी हैव टू चेंज द मेथड। सो यहाँ पर गेट की जगह आप पोस्ट करोगे। देन वी कैन राइट समथिंग इन द बॉडी। ठीक है, सो बॉडी में कुछ भी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो वी हैव टू गिव वन जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है? हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, राइट? सो प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए? आईडी, नेम एंड प्राइस। सो आई कैन गिव ऑल दीज थिंग्स हियर। सो एंड रिमेंबर दिस इज JSON, not JavaScript object. So key and value both will be enclosed in double quotations. Okay, so note this thing. So I will give one ID, and now the ID will be 105, and we can give the name. So okay, name, and the name will be okay. So ID will also be in double quotations. Let us give some name. So now let us give the name Samsung S23. Okay, Ultra, and let us give some price. So its price will be, we can say that it will be 1,60,000 around. Okay, so I have created this object inside the body of my client. Okay. So now let us send it. So you can see my request is still processing. Okay, why it is still processing? Because I haven't give any response from here. Okay, as I have given here. So that is why it will be processing. ठीक है, ये प्रोसेसिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गेट वाले केस में देखो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया था, यहाँ से कुछ भेजा था, लेकिन यहाँ से मैंने कुछ भेजा नहीं पोस्ट के अंदर। सो इस वजह से वो वेट कर रहा है कि कुछ आए सर्वर से। ओके, सो वो वेट ही करता रहेगा। अब मैंने कंसोल लॉग रिक्वेस्ट किया था, तो लेट अस सी व्हाट वी गेट इन द रिक्वेस्ट। So you can see this is the request object, and there are many things inside this request object. Okay, so what I am interested in, I am interested in the body. Okay, so let us write request.body. Okay, let us see what we are getting in request.body. Okay, once again, I will restart my server. So you can see my server is restarted, and let us send it once again. And you can see I'm getting undefined. Okay, that means whatever I'm sending from here is not coming to the server. Okay, why it is not coming to a server? Here we need a middleware. Okay, so जो भी हम यहाँ से भेज रहे हैं वो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है सर्वर। So उसका कारण क्या है कि मैंने मिडलवेयर का यूज नहीं किया है। So मिडलवेयर का यूज करने के लिए you have to write app dot use, and here you can give that middleware. So मुझे कौन सा middleware यूज करना है? express dot json. Okay, so why I am using this middleware? So that we can parse the JSON object from the body of our request. Okay, so that is why it is necessary to use the express.json middleware. Now let us see once again if I send the data. So you can see, okay, I'm getting the data now. Okay, ID, name, and price. Okay, so I'm getting the data now. What I can do? I can push the data inside this array. Okay, so बहुत ही सिंपल है। इस array में अगर स्टोर करना है डेटा तो इस array में पुश कर देंगे उस डेटा को। So here I will write response.send. Okay, first of all, let us give some response. Okay, I will write product added successfully. Okay, and here let us push it. So products dot push, and let us push our object. So request dot body.
Okay, and let us delete this console log. So my create API is ready. So let us send the request once again. If I send it, so you can see product added successfully. Okay, let us check if our product is added or not. So I will make one more rapid API client. No, not rapid API, Thunder client. Sorry. So let us make one more new request, and it will be a get request, and I can change it http colon slash slash local host colon 5000 slash products. Okay, now let us send it. Okay, why I'm not getting? Okay, the spelling is mistake of local. It's LOCL, local host colon 5000 slash products. Send it, and you can see I'm getting that Samsung S23 Ultra from the server. So that data is added to this array, right? So ऐसे करके हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि रियल लाइफ सर्वर्स पर आप कभी भी एरेज या ऑब्जेक्ट्स पर काम नहीं करेंगे। आप किसी डेटाबेस पर काम करेंगे लाइक एसक्यूएल और मोंगोडीबी। ओके, so in real life servers you are not going to use arrays or objects as your data. Okay, you are going to use some database management system like SQL or MongoDB. Okay, so I am just taking the example of array to showcase you how you can perform the CRUD operations with the help of APIs. Okay, so create, we have done the create, we have done the read. Now we need to update our products data. Okay, so here for updating the products data, I will write app.put. Okay, so app.put, what we want to update, we can write so slash product and slash, here I will use the ID. Okay, so why I'm using the ID here? Because I will identify that which product needs to be updated by its ID. Okay, so that is why I'm taking ID as a parameter. So this is called a route and this is called a parameter. ठीक है, सो ये राउट है और ये पैरामीटर है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सो मैं राउट ले रहा हूँ स्लैश प्रोडक्ट और मैं कोलन आईडी ले रहा हूँ ताकि मैं पता कर सकूं कि इस प्रोडक्ट में कौन सी आईडी पर मुझे अपडेट करना है। सो बैक टू अवर कोड. So comma, let us give some request handler function. So request comma response. Okay. अब यहाँ पर हम इसको अपडेट कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहले वही कंसोल लॉग चेक करेंगे हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, यू कैन सी। ओके, सो जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होता है हमारे पास, वैसे ही रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स भी होता है, जिससे हम ये पैरामीटर्स ले सकते हैं। So let us run this API and let us see we are getting the parameters or not. So post is done, get is done. Let us make one more request for put for update. So now it will be a put. Okay, so put is a method that is used for update. I will give http colon slash slash local host colon 5000 slash product slash 102. So let us say I want to change the product 102. Okay. And what all things we need to update, I can give that in the body. Okay. So let us copy our object from here and let us paste it here. Okay. So suppose, so the ID is 102. So ID will remain same 102. And let us just see what we have on 102. So we have MacBook on 102. Okay, so I want to change the name of the product. I want to make it as Apple MacBook Air. Okay, so here I can write it. So I want to change the name. Okay, so the name will be
Apple MacBook Air. Okay. And let us reduce the price also. So it cost you like 1,20,000. Okay. Oh, okay. I changed in the wrong place. So sorry for that. I have to change my port. Okay. So Apple MacBook Air is our product, and we have to change the price. Okay, 1,20,000. Now let us send this request. So send it. Okay, I'm getting one error. Okay, okay. I'm not using the HTTPS. Okay, I'm using HTTP. Send it once again, and you can see I'm getting that params. Okay, 102. So let us go to server, and we can write some logic to update our products array. Okay, let us console log request.params.id, and let us see once again. Send it. So you can see I'm getting the ID 102. So let us make use of the ID. Okay, so how we can make use of the ID? Okay, either you can create a for loop, or you can also create a map function. Okay, so the choice is yours. So I'm going to use the map function. Okay, so or I will change the things in the products array only. Okay, so let us see. Let us make a for loop. So for let I is equals to 0, and I should be less than products dot length and I plus plus. Okay. Now what we can do? We can check our array. So if products of I dot id is double equal to request dot params dot id. Okay, then if it is equal, then what we need to do? We need to update that array, right? So I can write products. Okay, I will get that data inside the request dot body. Okay, so let us also console log that. So console log request dot body. Okay, and let us see the once again. So send. So you can see I'm getting the ID which needs to be updated, and I'm getting the updated data. Okay, in the request.body. So let us make use of it. So I want product of I is equals to request.body.id. Okay, then what next? So same we will copy 3 more times. Okay, and we will write this will be as name, and this will be as price. Okay, now let us go out of the loop. Okay, and here we can send response.send and product updated successfully. Okay, so it will be our response messages. Delete these console logs, we don't need it here. Now let us check our code will work or not. So new request, if I send, so you can see product updated successfully. So was it updated or not? Let us check it. So send. So Apple iPhone. Okay, 103 is there, 104 is there.
Okay, just give me a minute. Why it is not updated? I'm only getting 12,000, 1,20,000, right? Okay, okay, okay. I got it. I got it. Okay, so product dot ID. Okay, so and the product dot name and product I dot price. Okay, so sorry for this silly mistake. Okay, now let us update it once again. So product updated successfully, and let us check it. So send it. So you can see my product is updated. Okay, so like this we can create the update API. Okay, now delete is very simple. So as we have created get, post and put, now you can delete also. So app dot delete. Now here also we need to take the params. So I will write slash product slash colon id. ओके, सो यहाँ भी आईडी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट डिलीट करना है. So we will have request and responses. So in the delete, I will get the params in request.params.id. Okay. So for this, I can use the slice method. Okay. So how we can use it? Okay, I can write products dot splice. Okay, we can give the start number, index, and delete count. So where we can get the index, we can get the index. So here also we have to give the for loop. So for let I is equals to 0 and I should be less than products dot length and I plus plus. And here let us check once again if products I dot id is double equal to request dot params dot id. Okay, then what we need to do? We need to give products dot splice, and here in the splice we have to give the start number, that is the index, so it will be I, comma, and the delete count, so we have to delete the one element only. And let us don't forget to give the response, so response dot send product deleted successfully. Okay, so let us start the server once again. Let us go to the new request. Okay, let us give this as delete. And if I send it, so you can see product deleted successfully. Let us check it. So send it. And you can see ID 102 is deleted now. So these are called the REST APIs. Okay. So APIs by which you can create, read, update, and delete. Okay. So any doubt, guys? Do you understand what we did? Okay. So we will have a doubt Q&A. Okay, so you can ask me any questions or if you have any doubts. So you can ask me. ओके संजना, CRUD ऑपरेशंस का जनरली आप वेबसाइट्स में कब यूज करते हो? मान लो कि मेरा कोई डेटाबेस है, ठीक है? उस पे मुझे कोई मैं एडमिन हूँ अपनी वेबसाइट का, ठीक है? उस पर मुझे कोई प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा? क्रिएट ऑपरेशन, ठीक है? मुझे सारे प्रोडक्ट्स को अगर रीड करना है, ठीक है? सारे प्रोडक्ट्स का डेटा चाहिए तो रीड करेंगे। अपडेट मतलब कोई प्रोडक्ट का आप इमेज चेंज करना चाहते हो
या उसका प्राइस चेंज करना चाहते हो तो अपडेट करोगे, और डिलीट मतलब कोई प्रोडक्ट जैसे आपके स्टॉक में नहीं है, आप उसको हटाना चाहते हो तो वहाँ डिलीट करोगे। ओके। Okay, sir, can you explain how to deploy RESTful API to a production environment, including consideration for scalability, security and performance? ठीक है, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, ये 3 चीज़ें अभी हमने अपने सर्वर में ची नहीं डाली है। ओके, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस उन सर्वर्स पर ज़रूरत पड़ती है जो सर्वर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है? जिनमें मान लो 100 एपीआईज़ हैं या थाउज़ेंड्स ऑफ एपीआईज़। ठीक है, अब अभी आप मेरा जो मैंने जो सर्वर बनाया है, उसका रिस्पॉन्स टाइम अगर आप देखोगे तो इट इज़ इक्वल टू 23 मिलीसेकंड्स और 25 मिलीसेकंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, इसको डिप्लॉय कर सकते हो आप। ओके, यू कैन डिप्लॉय इट ऑन रेंडर, ठीक है, हेरोकू है, रेंडर है, ऐसे कुछ अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप फ्री में सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हो विदाउट विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, कोड अगर आपको चाहिए तो मैं कोड आपको भेज देता हूँ। ओके, आई विल गिव इट विद द हेल्प ऑफ कोड शेयर। So codeshare.io, and I will copy this whole code and I will paste it here. Share code now. Paste it and copy the link, close it, and this is your code. ठीक है, चित्रांश डीबी में अगर CRUD ऑपरेशन मारता ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता फिर। ठीक है, एरे का एग्जाम्पल ही इसलिए लिया था ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, एरे थी इसलिए समझ में आया, डेटाबेस होता तो फिर घूम जाते इधर-उधर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड अ पैच रिक्वेस्ट? ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर रेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स द रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जो कि एक स्टैंडर्ड है, ठीक है? सो उस स्टैंडर्ड में उन्होंने बताया है दैट फॉर अपडेट यू शुड यूज़ द पुट मेथड। ओके, सो पुट और पैच दोनों ही अपडेट के लिए यूज़ होते हैं, राइट? सो बट एज़ पर द रेस्ट स्टैंडर्ड्स वी ओनली यूज़ द पुट। सर, कैन वी अपडेट एंड डिलीट साइमल्टेनियसली? ठीक है, इट इट डज़न्ट हैपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगर मान लो कि अपडेट करने से पहले अगर डिलीट वाली एपीआई चल गई, तो फिर अपडेट करने के लिए उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है? कोड शेयर किस लिए है? कोड शेयर होता है कोड शेयर करने के लिए। ठीक है, उसके नाम नाम से समझ सकते हो दीपक यार, है ना? कि कोड शेयर मतलब कोड शेयर कर सकते हैं। Which extension install to run this program in VS? Please tell me. You don't need any extension, Selva. Okay. You just need Node to execute this code. Okay. Just open the terminal, write the Node command, and it will be executed. Sir, NodeMon is not working. नोडमॉन इसलिए काम नहीं कर रहा है आपके सिस्टम में क्योंकि आपको उसको ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है? ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ओके, npm I then give the, okay, sorry, I have to close the server first. So you have to write npm I hyphen g stands for global and write the node. So it will be installed globally on your system. Architecture of a RESTful API. How do clients interact with the API and what are the key components of the API? ठीक है, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि एपीआई क्या है, सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, ठीक है, समझते हैं एक एग्जांपल से। गुड एक्सप्लेनेशन सर, मैं बिगिनिंग करना चाहता हूँ, कहाँ से करूँ? बिगिनिंग अगर करना चाहते हो ऋतिक, यूज़ जस्ट स्टार्ट विद द फ्रंट एंड, ठीक है? फ्रंट एंड से शुरू करो, ठीक है? जो भी लोग वेब डेवलपमेंट में नए हैं, यू शुड स्टार्ट विद द फ्रंट एंड ओनली।
upload this lecture in YouTube, it will be uploaded, don't worry. In code share blank showing, ठीक है, दोबारा से मैं शेयर करता हूँ, code share code now, and I will copy the code और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. Okay, it is pasted, and I can copy this URL and I'll paste once again. क्लासेस डेली चलेगी, ठीक है, ये क्लासेस नहीं है, ये वेबिनार है, ठीक है. ओके सर, थैंक यू, कैन वी अपडेट साइमल्टेनियसली? यस, अपडेट हो सकता है साइमल्टेनियसली, नो नो इश्यूज. सर फ्रंट एंड को एनहांस कैसे करें? देखो, फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब एज़ अ डेवलपर आपको आनी चाहिए। फ्रंट एंड पर एपीआईज़ कॉल्स आपको आने चाहिए, ठीक है? फिर फ्रंट एंड पर वो एपीआई से जो डेटा आ रहा है, उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको इंटरैक्टिव यूज़र इंटरफेसेस बनाने चाहिए, जिसके लिए आप कोई एनिमेशन लाइब्रेरी सीख सकते हैं, ओके? सो देयर आर मैनी वेज़ टू एनहांस योर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सर, मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, सीएसई ब्रांच सेकंड ईयर, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या करूँ आगे जाकर? ओके। सो सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप काउंसलिंग लेंगे, ओके, फ्रॉम टेक काउंसलिंग फ्रॉम योर सीनियर्स, ठीक है? या आपके जो कॉलेज में से पास आउट हो चुके हैं, उनसे आप थोड़ा-सा काउंसलिंग लो, एंड अगर आपको आगे क्या करना है, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, ओके? प्रीति, मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आपको आगे जाके ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है? आपका जो इंटरेस्ट है, आप उस डोमेन को सिलेक्ट करो और बस उसमें काम करना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। Sir, for front end, JavaScript should be started or Python. I want to go in DevOps. ठीक है. सो अगर फ्रंट एंड करना है तो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, पाइथन का उसमें कोई यूज नहीं है. और डेवऑप्स में अगर जाना है तो डेवऑप्स में ना ही जावास्क्रिप्ट की जरूरत है, ना ही पाइथन की जरूरत है. सर, इंडस्ट्री में कौन सी लैंग्वेज की डिमांड है, जावा या पाइथन? पाइथन. क्विज स्टार्ट हो गया क्या? यस, क्विज इज स्टार्टेड, यू कैन गिव द क्विज. सर, और भी लेक्चर लेकर आए, मजा आता है आपका क्लास में. ठीक है, मेरे वेबिनार्स रेगुलरली होते रहते हैं, ओके. सो मैं हर हफ्ते और हर 10-15 दिन में एक वेबिनार करता हूँ. यस, वेरी हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू ओमकार. एंड सर, एक सिंपल वे में एपीआई समझाओ ना, आपने पुराने लेक्चर में समझाया उस टॉपिक के बारे में. हाँ, वही वही मैं आपको बताने वाला था, मैं बस थोड़ा सा बिजी हो गया था क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ठीक है, सो वो एक बेसिक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, उसके लिए मुझे एक व्हाइट बोर्ड चाहिए. ठीक है, तो फिर से समझो सभी लोग कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है और एपीआईज़ क्या होती है, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, तो हम एक ब्लैंक बोर्ड बना लेते हैं. सो आई विल क्रिएट वन ब्लैंक बोर्ड, क्रिएट टीम बोर्ड, और इस ब्लैंक बोर्ड में हम समझेंगे कि चीजें क्या होती हैं. ओके. सो जैसा कि मैंने बताया, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास क्लाइंट होता है. ओके, सो दिस इज आवर क्लाइंट. ठीक है, इसको आप फ्रंट एंड भी बोल सकते हो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ क्लाइंट और अ फ्रंट एंड. ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ क्लाइंट, और इसको फ्रंट एंड भी बोला जाता है. ओके, क्लाइंट और फ्रंट एंड. फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक सर्वर होता है, राइट? तो यहाँ पर मैं वो भी बना देता हूँ. इसको हम सर्वर भी बोलते हैं और इसको बैक एंड भी बोला जाता है. ओके, सो मैं सर्वर बोलूँ, बैक एंड बोलूँ, एक ही बात है. सो एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है, फ्रंट एंड होता है. ओके, फ्रंट एंड और बैक एंड. अब फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, एपीआई.
सो एपीआई का काम क्या होता है? एपीआई एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है, ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है फॉर कनेक्टिंग द फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फिर इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। ओके, सो देयर इज वन डेटाबेस। ओके, सो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फुल स्टैक एप्लीकेशन के अंदर। एक फ्रंट एंड होता है, एपीआईज होती हैं, बैक एंड होता है और डेटाबेस होता है। ओके, सो अब ये काम कैसे कर रहा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। सो क्लाइंट क्लाइंट और फ्रंट एंड के लिए मैं क्या यूज कर रहा था? थंडर क्लाइंट, ठीक है, उसी से मैं सारी रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहा था। सो फॉर द फ्रंट एंड और द क्लाइंट आई हैव यूज्ड द थंडर क्लाइंट, जो कि एक वीएस कोड की एक्सटेंशन। फिर मैंने एपीआईज बनाई थी एक्सप्रेस में, और मैंने अपना रिक्वेस्ट हैंडलर में वो सर्वर बैकएंड का लॉजिक लिखा था, और डेटाबेस अभी इस केस में नहीं था। ओके, सो हम क्या करते हैं जनरली? वी send request to the APIs. Okay. Then APIs forward our request to the server. Then server communicates with the database. Okay, database will give some data to the server. Then server will give that data back to the API, and API will give that data back to the client. Okay, so this is the structure that we follow. अब इसको किस तरीके से समझ सकते हो? फुल स्टैक डेवलपमेंट और होटल का आर्किटेक्चर एक जैसा ही होता है। सो फुल स्टैक डेवलपमेंट में जैसे फ्रंट एंड होता है, वैसे ही होटल में हमारे पास क्या होता है? डाइनिंग एरिया। ओके, सो ये डाइनिंग एरिया क्या होता है? डाइनिंग एरिया वो एरिया होता है होटल में जहां पर कस्टमर बैठ के खाना खाते हैं, राइट? सो फ्रंट एंड और डाइनिंग एरिया एक ही जैसा होता है। फ्रंट एंड पर भी क्या होता है? यूजर आकर इंटरेक्ट करता है आपके एप्लीकेशन के साथ, वो अलग अलग काम करता है, राइट? वैसे ही डाइनिंग एरिया में क्या होता है? हमारा कस्टमर आकर बैठता है, इंटरेक्ट करता है, राइट, और ऑर्डर देता है। तो जैसे हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे ही डाइनिंग एरिया पर कस्टमर क्या करता है? ऑर्डर देता है खाने का। अब ये जो एपीआईज है, इनको हम क्या बोलेंगे? ये है वेटर्स, ठीक है। सो खाना लाने का और ऑर्डर लेने का काम किनका होता है? वेटर्स का होता है। तो जब भी आप डाइनिंग एरिया में आते हो, आप सबसे पहले वेटर को बुलाते हो, है ना? कि भाई ये ऑर्डर मुझे चाहिए और इसको लाकर देना है। सो डाइनिंग एरिया में कस्टमर आया, उसने ऑर्डर दिया वेटर को। वेटर फिर ऑर्डर कहाँ लेकर जाएगा? किचन में। ओके, सो दिस सर्वर इज द किचन। होटल की किचन होती है सर्वर। सो किचन में क्या होता है? खाना बनता है, हमारा बिजनेस लॉजिक होता है, ठीक है, सारे इंटरनल प्रोसेसेस हमारे किचन में होते हैं जहां पर डिशेस तैयार होती हैं। और डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज द पैंट्री, ठीक है। सो किचन में, हर होटल की किचन में एक पैंट्री होती है जहां पर खाना बनाने का सारा सामान रखा होता है। ओके, सो द सेम वर्कफ्लो हैपेंस इन होटल आल्सो। सो डाइनिंग एरिया में कस्टमर आता है, वो ऑर्डर देता है वेटर को कोई डिश का। वेटर वो ऑर्डर ले जाकर किचन में जाता है, ठीक है। किचन में क्या होता है? जो शेफ होता है वो पैंट्री में जाता है, डेटाबेस में जाता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए खाना बनाने के लिए, वो इंग्रेडिएंट्स किचन में लेकर आता है। फिर किचन में वो डिश प्रिपेयर होने के बाद हम वापस वेटर को वो डिश दे देते हैं, और वेटर ले जाकर वो डिश डाइनिंग एरिया में हमें दे देता है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। ओके, सो आप सभी को समझ में आया? ओके, लिंक क्विज का लिंक काम नहीं कर रहा है। ओके, द Pankaj will take care of it. Okay, so he will make that quiz work. ठीक है। Okay guys, so it's time to take a leave. सर पीएचपी डेवलपमेंट में करियर है क्या? देखो नवीन कुमार, क्या है, पीएचपी पर काम आज भी होता है, लेकिन सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, जो पुराने प्रोजेक्ट्स पीएचपी पर बने हुए हैं, उन पर जरूर काम होता है, उनको मेंटेन किया जाता है आज भी। सो उस पर कुछ जॉब मार्केट में आपको जॉब्स मिल जाएंगी। बट
आई सजेस्ट यू कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट में ही जाना है देन यू शुड स्विच टू सम न्यूअर एंड लेटेस्ट ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट और एंगुलर, ओके, नेक्स्ट जेएस, ऐसे कुछ फ्रेमवर्क्स पे काम करो सो ताकि आपको मॉडर्न जॉब मार्केट में जॉब मिल सके। मर्ज स्टैक इज गुड और बैड, इट डिपेंड्स। देखो, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ओके, सो जैसे अगर आपको एआई एमएल करना है, ठीक है, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग करना है तो पाइथन से अच्छा लैंग्वेज नहीं है उसके लिए। ओके, आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो वेब डेवलपमेंट का किंग कौन है आज के टाइम में? जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट से बेस्ट वेब डेवलपमेंट आप किसी और लैंग्वेज से नहीं कर सकते। तो वैसे ही हर एक लैंग्वेज की अपनी स्पेशलिटी होती है, ठीक है, कि वो सबसे अच्छा काम कौन सा कर सकता है। जेएसपी पर जॉब है क्या सर? जेएसपी जैसा मैंने बताया इज अ ओल्ड फैशन, ठीक है, अब हम सर्वर पेजेस का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं कहीं पर भी, ठीक है, हम बैकएंड एक अलग ही कंपोनेंट बनाते हैं फ्रेमवर्क्स के थ्रू। सो जैसा मैंने बोला जॉब्स हैं इन पर भी, ठीक है, बट वही कि पुराने प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं उनको बस मेंटेन करना है, उनमें नए फीचर्स ऐड करना है, कोई नया डेवलपमेंट वाला जॉब नहीं मिलेगा। ओके, पाइथन से आप बिल्कुल पीयूष, अगर आपको पाइथन आपने सीखा है तो आप बहुत ही आसानी से उसमें डीएसए कर सकते हैं। पाइथन से आप कर सकते हो डीएसए, नॉट नॉट एन इश्यू। ठीक है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल तो मैं बता देता हूँ। तो अगर आप मुझे सर्च करोगे गूगल पे, ओके, इफ यू सर्च मी ऑन गूगल, तो सबसे टॉप पर ही आपको मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगी। ओके, सो यू कैन गो टू दैट प्रोफाइल और दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आई विल शेयर इट आल्सो। ओके, so this is my LinkedIn profile. सर कैन यू प्लीज शो हाउ टू रिसीव सर्टिफिकेट? देखो, बहुत बहुत ही सिंपल है। क्विज देना है, क्विज में अगर पास हो गए तो सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं हुए पास तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके लिए इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने क्विज दे दिया है तो सर्टिफिकेट आ जाएगा, डोंट डोंट वरी गाइस। ओके, सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। सर आपका नेम क्या है? ठीक है, मेरा नाम है प्रांशु, ठीक है, प्रांशु राठौर मेरा नाम है। ओके, नेक्स्ट क्लासेस कब? ठीक है, ये कोई क्लास नहीं है, ये एक वेबिनार है। सर प्लीज एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। ओके, रिक्वेस्ट। राइट, सो इट्स टाइम गाइस, so let's call it a day and bind up this session. Hope we will meet in our next webinar on some same interesting topics, right? So bye guys, let's take a leave.